हेलो टीचर्स, ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वह भी हमारे इस चैनल एवं वीडियो से लाभ उठा सके। दोस्तों, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे ट्रिक्स चैनल जो है 10,000 सब्सक्राइबर को पार कर चुकी है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से NIOS के जो प्रैक्टिकल कोर्स 511 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का तीसरा भाग जो है कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम का 5वां पार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकर्शन और फील्ड ट्रिप्स या फील्ड विजिट के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी टीचर्स, सभी दोस्तों को, जिन्होंने हमारे इस ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइबर को 10,000 सब्सक्राइबर का अबव पार करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए शुरू करते हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का तीसरा भाग का 5वां पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप्स या फील्ड विजिट। सबसे पहले देखिए, आपको उसी तरह से अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर लिखना है। इसमें आपको किस क्लास का आप फील्ड ट्रिप्स ले जा रहे हैं, एक्सकर्शन करा रहे हैं, उसका क्लास देना है, किस डेट को करनी है उसका डेट देना है और टाइम ड्यूरेशन देना है। तो देखिए, मैंने 4 घंटा का दिया है, आपको अपने अनुसार आपको देना है। इसके बाद देखिए, टिक मार्क्स द वेन्यू ऑफ द फील्ड ट्रिप। आप किस वेन्यू को आप फील्ड ट्रिप के रूप में लेना चाहते हैं, उसको आपको टिक मार्क करना है। देखिए, हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस, फेयर, स्टेट असेंबली, आकाशवाणी या दूरदर्शन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, प्लेनेटेरियम, डैम, फैक्ट्री, एनी अदर प्लेस स्पेसिफाई। तो मैंने देखिए ग्रीन कलर किया है जूलॉजिकल पार्क को। मैं इस वीडियो में आज जूलॉजिकल पार्क का जो विजिट होगा, फील्ड ट्रिप्स होगा या एक्सकर्शन होगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिपरेटरी एक्टिविटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड ट्रिप्स एक्सकर्शन कीपिंग इन माइंड लेसन ए लर्नर इंटरेस्ट। देखिए, एज ए क्लास टीचर ऑफ क्लास 8, आई एंड माई अदर कलीग डिसाइड to take excursion. We are at first could not decided to which place we will go for excursion, but when we search AVS book, one lesson is fully for excursion on zoological park. Then we all decide to go excursion for educational place, zoological park. We went to our headmaster office to inform him that we are going for excursion with class 8. Our headmaster agreed and said that it is good for class 8 student. Our headmaster said that we are going to call a guardian meeting for this important excursion. In the meeting, all parents agreed that excursion will be very important for our child and appreciate our all efforts. All students of class 8 happy to go excursion in zoological park. इस तरह से आपको अपने से स्टेप्स बनाने हैं। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फील्ड ट्रिप्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फील्ड ट्रिप्स आर और एक्सकर्शन आर एज फॉलोज। It is very important to all students that they will know about their different types of animals, their habits, their food, their nature to spend their life, their habitats. Zoological park is a very important place where different types of animals and plants will be there. तो आपको और भी एडजेक्टिव, आपको उसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको डालने हैं, किस प्रकार आप दूसरे करते हैं दूसरे का भी डालना है। सेकेंड पॉइंट देखिए, स्टेप टेकन फॉर ऑर्गेनाइजेशन द फील्ड ट्रिप्स और एक्सकर्शन।
और हेड मास्टर कॉल अ पेरेंट मीटिंग्स अबाउट द एक्सकर्शन। आपको स्टेप्स करनी है, किस प्रकार आपको करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। ऑल पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग विच इज़ हेल्ड अबाउट एक्सकर्शन ऑफ जूलॉजिकल पार्क। द पेरेंट्स आर एग्री विथ आवर फील्ड ट्रिप्स और एक्सकर्शन फॉर जूलॉजिकल पार्क एंड दे ऑल अप्रिशिएट to efforts that child will be learn about wild animal and their natural habitat, food, their life. Finally, field amount fix per student to going to excursion. अब देखिए मैंने स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन की है, थोड़ी आपको उसके बारे में करना है। स्टेप्स टू प्लानिंग फील्ड ट्रिप्स, किस प्रकार आपको स्टेप प्लान करना है। डिसाइड वेयर यू आर गोइंग, ask your administrator, arrange for transportation, decide on a food plan, plan your schedule, arrange your supervisor. 7 देखिए create a permission form, decide who's allowed to go, tie in your field trip to your curriculum. तो ये रहा स्टेप्स जो है। These are the steps you will need to cover for your field trip plan. The order of these steps may be different for you, but be sure to think about all these points. इसमें तो पॉइंट आपको देना ही होगा उसी पॉइंट के अनुसार। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोसीड्यूर फॉर ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप्स और एक्सकर्शन। We all at first decide a final date for going to excursion for zoological park. Students are very happy to go to the zoological park. Then we all fix a final date for excursion. Our excursion will be start on 24th April 2008 from our school premises at 7:30 AM and we will be return at 5 PM on that day. देखिए हमारा डेट थोड़ा मैंने जो ऊपर डेट दिया है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है, इसको आपको ठीक करना है। यहाँ मैंने 30 को दिया है, जब आपको जिस डेट को जाना है उसी डेट को इस जगह में होना चाहिए। अब देख लीजिए डेट हमारा जो सेम नहीं मिल रहा है। आपका जो यहाँ देखिए 30/4/2018 को डेट है, वहीं नीचे आपको 30/4/2018 देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए we all inform our class 8 students to get ready for visit zoological park on that day. Then our school booked a luxury bus for the excursion. Schools also take decisions for tiffin and lunch for the student and school staffs. आप इतना भी लिख सकते हैं, आप इससे भी ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिया है। Educational field trips may be developed by each school to provide a variety of experiences and enhance the student educational opportunity. Although field trips are adjunct to the instructional program, each is learning activity and bear a direct relationship to the normal school experiences. अब देख रहे हैं पॉइंट, आप बहुत लंबी पॉइंट है, इसमें देख सकते हैं। दिस प्रोसीड्यूर फॉर ऑप्टिमम स्टूडेंट बेनिफिट, each field trip must be well planned beforehand and thoroughly evaluated after completion. The teacher or sponsor in charge of the group is responsible for the activity just as if it were conducted at school. All the students within the class or school group must be given the opportunity to participate in the field trip. This procedure has been developed to assist school in planning and conducting educational field trips and travel to school oriented activities of campus. The overall objective is to facilitate optimum learning experiences through educational field trips and school sponsored student travel to approved activities. The superintendent shall prepare administrative procedure for the operation of both field and other district sponsored trip, including athletics trips, which shall ensure. यहाँ मैंने एक पॉइंट को एक्स्ट्रा दे दिया है, आप इसे हटा भी सकते हैं, इस लाइन को, दो सुपरिंटेंडेंट लाइन को।
द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट, किस प्रकार आपको जो है प्रोसीड्यूर में आपको रखना है, प्रोसीड्यूर आपको देनी है. पेरेंटल परमिशन इज sought and obtained before any student leave the district on the trip. Each trip is properly planned, and if a field trip is integrated with the curriculum, evaluated and followed up by appropriate activities which enhance its usefulness. The effectiveness of the field trip activity is judged in terms of demonstrated learning outcomes. Each trip is properly monitored and supervised. Student behavior while on all field trips complies with the student code. Conduct and all other rules, policies, and procedures set forth by schools. A copy of each student emergency medical authorization form is in the possession to the staff member in charge. This is the main point of a field trips. अब ये देखिए, इसमें और पॉइंट हमने दिया है. अप्रूवल ऑफ फील्ड ट्रिप्स, आपको अप्रूवल करानी है स्कूल में. नेक्स्ट देखिए पेरेंटल परमिशन एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यहाँ देखिए पेरेंटल क्या परमिशन क्या है, पेरेंट का परमिशन क्या है एंड स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको आपको देखनी है. Permission for a student to participate in an educational field trip or travel as a member of school classes or group to approve off-campus activities must be obtained from the school, students, parents or guardian. Parent permission or responsibility statement for off-campus activities to be used by all classes or group for each individual trip or activity. Student medical release form for travel to be used by member of bands or choral groups when school buses or approved commercial buses are used. Each student must complete one form which remain in effect the entire school year unless cancelled in writing by the parent or guardian. आइए इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन मेन पॉइंट है. आपको फील्ड ट्रिप्स में प्रत्येक का एक मेडिकल फिटनेस या मेडिकल के लिए आपको करनी पड़ती है. पेरेंटल इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना पड़ती है. बिना इस सब के बारे में आप फील्ड ट्रिप्स नहीं कर सकते. ट्रांसपोर्टेशन देखिए, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स एंड अदर स्टूडेंट ट्रैवल टू स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ विल बी बाय स्कूल बसेस, कमर्शियल कैरियर और अप्रूव्ड प्राइवेट व्हीकल्स. Specific procedure related to the use of school buses and private vehicles are included below. देखिए यूज ऑफ बसेस, कुछ पॉइंट मैं ज़्यादा दिया हूँ, आप उसे हटा सकते हैं. द स्कूल मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट रिक्वेजिशन फॉर स्पेशल स्कूल बसेस ट्रांसपोर्टेशन साइन बाय प्रिंसिपल, सी फॉर्म 23405. तो एक फॉर्म है, मैंने इसको नहीं दिखाया है, लंबी हो जाएगी. आप अपने तरफ से एक अलग जैसे जहाँ जिस स्कूल में जो बसेस चलती हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अलग जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको आपको पूरा करना होता है. टू नंबर द सिटिंग कैपेसिटी ऑन मस्ट स्कूल बसेस यूज्ड फॉर एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज 65. हाउएवर consideration should be given to the size of a student and the length of the trip when determining the number of buses needed. The seating capacity for secondary students on must school bus is 43. School bus loops are the official student loading and unloading area at school. Travel will begin and end at the school. Student will not be picked up or let off at other location. School bus driver shall ensure that emergency procedure instructions are discussed prior to departure. Travel is permitted to the places and areas designated on the bus requisition only. अब देख लीजिए इटिनरी आप दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं. An itinerary must be filled in the principal's office for the sponsor or sponsoring organization. Two schools contact person not making the trips must be identified for parent with each contact person's phone numbers in order to respond to call or questions concerning the trips.
Names of the contact person and their phone numbers are to be listed on the form. Parents' permission and responsibility statement for off-campus activities. तो इटनरी में आप कर सकते हैं. एकोमोडेशन तो आपको मस्ट है, एकोमोडेशन देना है. एकोमोडेशन में देखना है ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द कमर्शियल और ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एकोमोडेशंस वाइल on an educational field trips or schools sponsored student travel must be reviewed and approved by the principals before traveling begins. Where applicable, hotel, motel, resort report are to be submitted by the sponsor at the conclusions of the trip. इसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ द ट्रिप. आपको ये तो कॉस्ट क्या अरेंज करनी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार आप ट्रिप कर रहे हैं. All arrangements for payment of expenses including cost of accommodations for individual student group and the chaperones incurred on a school sponsored trip shall be the responsibility of the school. Chairpersons होगा वहाँ पर chaperones लिखा हुआ है. All such arrangements shall have prior approval of the school principal. अब देखिए प्रॉब्लम्स देखिए. Problems encountered for conducting the field trips. A field trip can be great, rewarding and exciting learning experiences for the student, but there are also disadvantages to taking your classroom outdoors or to a museum, theater or learning centers. Budget restraint, lack of chaperones, difficulties controlling student behavior, organizing and engaging lessons, and dealing with anxious children are the potential challenges. Establishing rules, soliciting support, and proper planning can alleviate many of the disadvantages of taking a field trip. Many schools provide certain field trips due to cost, safety issues, and lack of chaperones. It can prove difficult to organize field trips and make arrangement for students who cannot afford to go. Collect parental consent, budget the transportation need, and find enough parents who will supervise. This can limit the resource, and field trips can be successful considering Consider teaming up with another teacher to help generate interest and having planning support. Plan a small field trip to a local museum or learning center to gauge to the success with it. ये म्यूजियम की जगह में आपको जो है जियोलॉजिकल पार्ट देना है, जो आप जिस तरह से आप करेंगे उसके बारे में आपको देना है. नेक्स्ट देखिए लॉस ऑफ स्कूल टाइम. ये सब डिफिकल्टीज है. स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर एनी ट्रिप दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ स्कूल टाइम. Where possible, trips should be scheduled without loss of school time, that is student holidays, spring vacation or during the summer vacation. In the event a trip would require a student to be absent from school for more than 2 days, the trip must be approved by the principal and area superintendent. तो इस तरह से आपको डिफिकल्टीज आपको दिखानी है. नेक्स्ट देखिए सोल्यूशन एनफेसिस्ड रिलेटिंग टू द फील्ड ट्रिप्स. अब देखिए यहाँ मैंने प्रॉब्लम्स वाइज किया है, इसे आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. प्रॉब्लम 1 दिया है फंडिंग, क्या जो है किस प्रकार आप सोल्यूशन कर सकते हैं आपकी जो है सोल्यूशन इनविसाइज्ड रिलेटिंग टू द फील्ड ट्रिप्स. तो फंडिंग पोल्यूशन है. प्रॉब्लम पहला है what trips organizers say, I need to make the trips affordable for all ranges of our income. It is difficult to raise funds for transportation and lodging. Solution देखिए solution में क्या दिया, just about every school or youth group has experience with fundraising. We could write about door-to-door sales, help from the PTA, social media and crowdfunding campaign and more, but we are guessing you know plenty about those methods already. प्लानिंग द ट्रिप, किस प्रकार आपको ट्रिप को प्लान करना है इसके बारे में मैंने दिया है. थर्ड देखिए एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ ए फील्ड ट्रिप्स.
दोस्तों वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डायलॉग को कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट को भी आपको देखना है। अंत में देखिए इम्पैक्ट ऑफ द फील्ड ट्रिप्स और एक्सकर्शन ऑन स्कूल एनवायरनमेंट। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट फील्ड ट्रिप्स ऑन स्कूल एनवायरनमेंट। Field trips are a great way to bring kids out of the standard school environment. They can have an educational experience to zoo, community agency, nature center, or the more. Teacher, there are scenes, museum, hospital, local businesses, and plenty of other interesting places where kids can have an educational opportunity and provide community service at the same time. There may be opportunity to educate the kids about what is going on inside their community. They may also be able to help in different ways, such as visiting elderly patients, taking parts in various community services, or doing something else depending upon the location that is visited. Children look forward to field trips, and they are able to spend an entire day learning in an environment that is different than their classroom. A particular topic can be covered during the field trip, and when they get back to the classroom, the topic can be covered through various lesson plan. Many times children are told about the field trips days or even weeks in advance. They look forward to the day where they get to climb onto a school bus and go somewhere different. They may be in countdown mode all the way up until it's time to go, and this can add excitement in the classroom unlike anything else. तो इस प्रकार के चिल्ड्रन में एक्साइटमेंट होती है। और अंत में आपको लिखना है सिग्नेचर ऑफ द ट्रेन टीचर, एंड उसके नीचे काउंटर सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विद द ऑफिशियल, उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ द मेंटर एंड सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर। तो इस प्रकार ये वीडियो रहा आपका कोर्स कोड जो है आपका 511 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी प्रैक्टिकल कोर्स का जो है तीसरा भाग, कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम्स का 5वां पार्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप्स या फील्ड विजिट। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और एक बार धन्यवाद बताता हूँ आप सभी को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। 10,000 सब्सक्राइबर जो है हमारे चैनल को पार कर चुकी है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं एक नया चैनल को बना रहा हूँ एग्ज़ाम स्पेशल के लिए। अगले वीडियो में मैं उस चैनल का नाम बताऊंगा, एग्ज़ाम स्पेशल। आपको उसी में सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर उसी में रहेंगे, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादा वीडियो हो जाने के कारण लोडिंग ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं एक नए चैनल को अपलोड करूँगा। सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी वर्जन में सारे क्वेश्चन को उसी में अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।